हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टैक्सेस वर्क्स इन कनाडा। एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट व्हेन आई केम, है ना, मेरे को टैक्सेस बारे कुछ नहीं पता था क्योंकि हम इंडिया में एक भी टैक्सेस फाइल नहीं करते हैं एंड वी डोंट नो। ठीक है, अब टैक्सेस इन कनाडा प्लेज अ रियली इंपॉर्टेंट रोल। हाउ डज दैट वर्क, एवरीथिंग अबाउट टैक्सेस, क्यों फाइल करना चाहिए, कब फाइल करना चाहिए, कौन से समय फाइल करना चाहिए और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सो वी हैव अ गेस्ट टुडे हु इज गोना टॉक एंड टेल अस अबाउट मोर इन डेप्थ about taxes in Canada. So without any further ado, let's invite. All right, everyone. So now we have Kiran Sandhu with us. She's a tax specialist here in Canada. So can you please introduce yourself to my viewers today? Hi everyone, thank you so much Neeraj for having me. So I'm an accountant by profession and I have about 5 years of experience in tax filing, including personal tax filing, corporate tax filing. Um, I'm currently pursuing my CPA designation as well. So yeah, that's pretty much about me. थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। सो बेसिकली मैं इस वीडियो को आपके साथ क्यों बना रहा हूँ आज, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो बनाई थी एंड एवरी ईयर मार्च के एंड में टैक्स सीजन होता है कनाडा। तो अब मेरे को ये चीज बताओ, लाइक वर्किंग एज अ प्रोफेशनल हियर इन कनाडा, हाउ टैक्स फाइलिंग वर्क्स इन कनाडा। सो लाइक ब्रीफली डिस्क्राइब, लाइक थोड़ा ओवरव्यू आप दे दो कि कैसे काम करती है। So tax filing is mandatory for everyone in Canada. Everyone has to file their yearly tax return, whether you are a resident or you're immigrant or you are international student. So whatever you're like, for example, you're working in a job or you have self-employment income, at the year end you have to file your tax return. Just international student and they're working in a job, they still have to file their tax return at the year end, so they can get the benefits. There are so many benefits that you can avail if you file your tax return on time. And in Canada, let's say if you skip your tax filing for a few years, in the end you have to file it because you will need it in the future for sure. Okay, so जैसे आपने कहा कि every year we have to file taxes. अब every year ये मार्च के महीने में होता है as of I know. So मार्च अब जैसे आ रहा है, so I again need to file taxes. ठीक है, so as a person या like personally as a friend मैं आपको जानता हूँ, आपने मेरे taxes 3 साल के फाइल किए हैं. So let's say if a viewer और कोई भी जो देख रहा है वीडियो, अगर आपको reach out करना चाहता है, so how does that tax filing works and like how to file taxes? Right. तो आप ये बताओ. Yeah, so there are so many different ways you can file your tax return. अब अपने जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, नए आते हैं, उनको पता नहीं होता कि कहाँ जाके फाइल करना है. So this would be really helpful for everyone watching this video, I assume, because there are so many different places where you can get your tax return done, but it depends. You need to choose wisely that you're not paying too much money. Or you're not getting it from somebody who doesn't have so much knowledge and they can make errors. So क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कि आप एक तो आप अच्छे टैक्स प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं जिन्होंने स्टडी करी हो, जिनको पता हो कि कैसे करना है. But there are plenty of options, like you can go to a tax place and give your T4s and they can do it for you. मतलब ये ऐसे फाइल करता है कि जैसे पीआर, इमिग्रेशन, वर्क परमिट मेरे को अप्लाई करना है कि या मैं खुद से कर लूं या मैं जिसको पर्सनली जानता हूं, या आई कैन गो टू लाइक इमिग्रेशन कंसल्टेंट और एनीथिंग. सो चलो, सो दैट्स अ रियली गुड पॉइंट. तो they can for sure reach out to you. I'll put the email. But let's talk more about कि एक बार taxes मैंने file कर लिए, like a person file taxes, what are the benefits? हमें benefits क्या मिलते हैं tax file करने के कनाडा में? So there are so many benefits, as I already told you. If you file your taxes on time, the first one would be your tax refund. Especially अपने international students आते हैं, we pay so much tuition fees, like almost 3 times as compared to the domestic students. Right? मैंने खुद ने मतलब $10,000 per semester फीस की थी. So if you file your tax return on time, what happens is, जैसे आपने पूरे साल काम किया, आपका एम्प्लॉयर उसमें आपकी T4 में से टैक्स डिडक्ट कर रहा है every paycheck. Right. So if you have tuition credits, it's called tuition credits because when you're paying your tuition fees and you're putting it towards your income tax return, you get some credits, which reduces your tax liability at the year end. So let's say you have paid $1,000 in taxes over the year in your paychecks. तो लास्ट ईयर एंड में क्या होगा, आपके क्रेडिट्स की वजह से आपको वो रिफंड वापस मिल जाएगा, स्पेशली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. दैट्स द फर्स्ट बेनिफिट. But for other people, like if you are PR or if you work on work permit or you are a resident here, then still there are so many benefits because
You get your GST benefit if your income is under a certain limit for the year. And secondly, if you have children, then you get your child tax if you file your taxes on time. Otherwise, your payment will be delayed, right? तीसरा benefit है for permanent residence application. As we know, like when we come here as international students, after 2 or 3 years, हम सबको अपनी permanent resident की file लगानी होती है. तो उसके लिए आपको tax return चाहिए, आपके tax documents चाहिए, and if you are not filing your tax return on time, then it will be an issue for you, right? And the last one, there are so many, but briefly, like the fourth one would like be the most common ones, right? like, you know? Yeah, in the future, like everyone wants to have their own house, right? So in the future, if you want to buy a house, the mortgage broker would need a copy of your tax return for sure to get approval from your bank. So it does help in the long run as well. So there are like plenty of benefits, and on top of everything, I would say just file your taxes, because if you don't and you owe some money to CRA, then you will get penalized and you have to pay interest charges, and it's not fun. So basically, जैसे हम इंडिया में छुपा लेते हैं taxes, like something like that we can't do here. You have to go and file your taxes every year. Yeah. But इसमें मैं एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आपसे ये बोलना चाहूँगा कि एज अ लाइक मेरी जो सराउंडिंग्स है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इस समय, और जब आपने स्टूडेंट क्रेडिट्स की बात की, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कि भाई हमें लगता है कि मेरे को $1000 आ जाएगा, लाइक इट लाइक एड्स अप टू योर, है ना, मनी, कि वो कहीं ना कहीं चीजें काम आपके एंड में कर जाती हैं. सो मेरे को अब ये चीज बताओ, हाउ स्टूडेंट क्रेडिट्स, सो लेट्स से इफ आई हैव पेड ओवर 2 years ऑफ डिप्लोमा, आई पेड $40,000 फीस इन टोटल. तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से टेक $40 था, $40,000 इन टोटल मैंने स्टूडेंट क्रेडिट्स पे किए, तो उसमें फिर कैसे ये लाइक स्टूडेंट क्रेडिट्स वर्क करेंगे टैक्सेस फाइल कर समय? या सो आई गेस इंटरनेशनल स्टूडेंट कभी बार क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि ओ हमने $40,000 ट्यूशन फीस पे करी तो हमें $40,000 वापस आना चाहिए, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, व्हिच इज ओके, बिकॉज नो क्वेश्चन इज स्टूपिड, राइट? इफ यू मेरे को तो खुद नहीं पता था जब मैंने फर्स्ट टाइम पे किया. या इफ यू आर न्यू टू अ कंट्री, you're supposed to ask all these questions, and I think if you're not asking, you're losing something, right? So if you have paid so much of money in tuition fees, as a general rule of thumb, about 2 or 3 years until you are on your work permit, you get refund back, because your credits really add up and you get so much credit as compared to, you know, how much you're मतलब paying as a जैसे ये tuition आपने fees. बताया था कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 40,000 पे किया है, जब तक मेरी सैलरी 40,000 इन कनाडा रीच नहीं कर जाती, तो उसके अंदर जितने भी मोस्ट ऑफ द टैक्सेस होंगे एक्सक्लूडिंग जीएसटी, that would come back to me if I file my taxes. मतलब something कुछ ऐसे. बाकी भाई जिसको और पूछना है, sorry, you're saying something. Yeah, exactly. I mean, like, there is no rule of thumb that you're gonna get refund back every year, but there is generally, like, you know, if you are on work permit and you're not making too much money, we can give you a rough estimate, but it's never a promise that you are gonna get a refund, because that's where अपने international student कभी-कभी confused हो जाते हैं, right? कि मेरे friend को $2,000, $3,000 वापस आया और मुझे तो refund नहीं आया, मुझे तो pay करना पड़ा, या फिर मुझे सिर्फ 200 refund आया, right? तो वहाँ पे क्या होता है कि it all depends on the situation. अब हम बोल दें, right, and somebody comes and they're like, इतना आया नहीं, yeah, exactly. So it's like case specific, है ना, मतलब जिसका जितना इतना आएगा. So चलो ये भी हो गया, मतलब बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, मतलब you should go and file your taxes, है ना, and for sure somebody will reach you out. But इसका जो अगला एक कॉन्ट्री पॉइंट आता है कि लेट्स से आपने एजेंट्स के बारे में बताया कि हम आपको या किसी और को जो जा रहा है उसके अच्छे ताक पतल करके फिर हम उसके आ जाएं. सेकंड पॉइंट बेनिफिट. तीसरा पॉइंट ये आता है व्हाट अदर पॉइंट्स टू कीप इन माइंड व्हाइल फाइलिंग टैक्सेस, लाइक इफ यू हैव एनीथिंग लाइक अदर पॉइंट्स. राइट. So when you are filing your taxes for the first time in Canada, probably आपको पता नहीं होगा कि क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. So the first most important thing is choose your tax professional or tax preparer wisely, for sure. You know, if they mess up, फिर problem है, audit होगा, या फिर आपको दोबारा reassess कराना पड़ेगा, है ना, होएगी, right? और T4s मंगवाओ, ये सब, and it's like too much of work, right? So that's the one thing. Second would be, I would highly recommend all of the international students watching this, or, you know, residents or anyone. If you're filing your taxes in Canada, please make sure you have your CRA account signed up. Because most of the time when we do somebody's tax return, we get access, right? But in the future, if they need their T4s or anything, they have to call us or message us, like, you know, please send us T4 or whatever. And we are here to help, and we are happy to help. But, you know, sometimes you need it on an urgent basis.
तो अगर आपका CRA अकाउंट है उस टाइम पे, तो you can just log in and get your things out of your Okay. CRA account, right? That's pretty easy. Yeah. So I always highly recommend. And एक और बात जो आई थिंक कई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नहीं पता होती कि अगर आपको टैक्स फाइल करे हैं तो आप अपने रिफंड के लिए अपना जो डायरेक्ट डिपॉजिट सेटअप कर सकते हो अपने बैंक के थ्रू. दैट्स सो व्हाट्स गोना हैपन विद दैट इज लाइक आपका रिफंड जो आएगा वो आपका सीधा बैंक अकाउंट में आ जाएगा. आपको यू डोंट नीड टू वरी अबाउट लाइक गेटिंग योर चेक्स एंड डिपॉजिट इट और एनीथिंग. यू नो समटाइम्स वी चेंज एड्रेस, फिर चेक गुम हो जाते हैं या आपके लेटर्स गुम हो जाते हैं. सो देन इट्स पेन, राइट? ऑलरेडी. बट मेरे को एक चीज बताओ, जो आपने माई सीआर अकाउंट के बारे में बताया कि इसमें सब कुछ होता है. सो इसमें तो बंदा लाइक खुद फाइल कर ले टैक्सेस. जैसे माई सीएस अकाउंट में मैं खुद वर्क परमिट अप्लाई कर सकता हूँ. To the point where you said like if you can file your taxes through your MyCRA account. So MyCRA account is not like a software to file your tax return. It's just an account for all of your tax needs, like where you can access your documents or you can pay your bills related to taxes. But आप फाइल नहीं कर सकते. Okay, that's really wonderful. मतलब माई सीआर अकाउंट एक तरह से आपका टूल है, पर्सनल कस्टमाइज्ड टूल through Canada government, which like contains all your credit history. ठीक है, the day you come in and मरते दम तक. ठीक है. So basically माई सीआर अकाउंट बना ले. Moving on to the next one. So आप मेरे को ये बताओ कि चलो वो सब तो हो गया कि हमने टैक्स फाइल करना है, बट द मेन थिंग इज व्हाट डॉक्यूमेंट्स वी नीड. कि भाई अगर मेरे को मार्च में कोई ऐसे डॉक्यूमेंट चाहिए जो मेरे को पहले से रेडी करके रखने चाहिए. सो प्लीज एक एक मतलब अगर आप ओवरव्यू डॉक्यूमेंट्स पे दे सको. So documents are very important actually. For personal file, usually you have your T4s from your work, which is your employment slips. Like you know, if you're working for an employer, then you get T4s. But if you're working yourself, you need to keep all your documents like expenses and income records. Like you know, international students keep the dishes or delivery services or they do Uber, right? So वो उनको खुद उसके records maintain करने होते हैं. उसके अलावा tuition slip होती है जिसकी वजह से हमको credit मिलते हैं. That's very important, that you can get from your university portal. Other than that, if you have any medical bills you want to claim as your medical expense, you can bring those in. Or if you have RSP contribution, you get those slips. पर मेरे को एक और क्वेश्चन है कि आपने बताया T4 which I get from my employer. जो आपने एजुकेशन का बताया उसमें मैं थोड़ा ऐड कर सकता हूँ कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट ये देख रहे हैं वो आपके जो यूनिवर्सिटी होती है, जैसे आप माई यूएफई में पढ़ता हूँ, तो माई यूएफई अगर आप खोलोगे उसके अंदर ही टैक्स का सेक्शन होता है. वहां जाओगे, ईयर डालो, वहां पे आपकी एज अ पीडीएफ एक फाइल आएगी. दैट इज योर T22. वो भी आपको T4 के साथ लेके जानी पड़ती है जब आप टैक्स फाइल कराने जा रहे हो. इफ यू हैव स्टूडेंट क्रेडिट्स की उससे भी आपको बड़े सारे बेनिफिट मिलते हैं जो आपने पहले. बाकी मेरा एक क्वेश्चन ये आता है आपसे कि लाइक this is gonna be really helpful for everybody who is watching. But if you don't mind, can I just share your email address or maybe the Instagram page so that people can reach out to you if they have any questions? Yeah, sure. I'll provide you the details after the interview, and we would be really happy to help everyone. Because you know, मैं खुद international student थी before like 5 years. Then I worked here for a few years, and now I'm a permanent resident and working in accounting field and working as a tax professional. I'm in touch with Kiran, so like I know her from past 3 years. She came as an international student, being on a work permit, now as a PR, serving as a tax professional here in Canada. So like I really know, and मेरे को इनसे अच्छा कोई like person नहीं मिला जिससे मैं और डिटेल में टैक्सेस के बारे में पूछ सकूं. So मेरे को भी कोई क्वेश्चन होता है मैं आपके पास ही आता हूँ. So thank you so much for resolving all my queries. So I'm pretty sure कि मैं आपकी email address डालूंगा तो people आपको reach out करेंगे if you don't mind, है ना, कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं कॉमन वाले. Yeah, no worries. That's great. So but as of now मैं जानता हूँ like कि आपकी अभी like study भी चल रही है, साथ साथ full time job भी है, and you have like most of the other things going around, है ना. So I mean are you filing taxes this year as well? Like if you are, like you told me like you're gonna start up something as a startup kind of thing with one of your partner. So if you can tell something about that thing, but maybe that would be beneficial. Yeah, obviously, because obviously my main focus is on my studies and getting my CPA designation, because that would give me more knowledge about taxation and accounting in general. But yeah, I'm filing tax returns this year as well, along with my partner Manjinder. I think you made a tax video with him last year explaining about the taxes, and we are kind of in the process of registering our corporation, so we can help more and more people. And you know, our main motive is to help everyone get all their benefits on time. And you know, in general, international students, I can relate to them because
they need more information about how tax filing works. Okay, thank you दी for telling that, है ना. But other than that मेरे को ये बताओ कि as a student जो मेरा mindset होता था जब मैं आपसे नहीं मिला था, मेरा ये होता था कि अच्छा टैक्स फाइल करना है भाई, मैंने नहीं देने $100 एक साल के, आई एम गोना गो फॉर चीप डेट $40 $50. बट एट द सेम टाइम व्हाट आई हैव फिगर्ड आउट, लाइक व्हाट आई हैव डिस्कस्ड विद लाइक मेनी पीपल, की कभी कभी टैक्सेस रुइन आउट हो जाते हैं, और आपने कहा अगर रुइन आउट हुए मे बी इट कैन लाइक go against you, और maybe मतलब जैसे अगर आपको तकलीफ दे सकते हैं ना in getting your house with PR like everything. So थोड़ा सा मेरे को ये बताओ कि why they should choose you instead of going to somebody. Right. Yeah, for sure. Because when it comes to tax filing, आपके पास दो option है. Either you go to cheaper places where they can do it for like $30, or you can go to really expensive ones like big companies or firms where they charge you about like somewhere between 120 to 150, and वो भी एक simple tax return के. Let's say आपकी self employment income है, आपने skip the dishes करी है, they will charge you more than $200. मतलब जितने आपके पंगे होंगे फिर देखो. Exactly. Get up there. And both of the options I would say have both advantages and disadvantages. If you go to a cheaper option, like really cheap option, there are so many places where their main job is not to file taxes, but they just do it on the side, like insurance companies. There could be like very knowledgeable people over there, but so far I have experiences with so many different places where I've seen like they're filing taxes on the side and they don't know much about it, and they don't give information about your benefits, they don't file it properly, and then what happens, you get reassessed. अच्छा, I have question. So मैंने जो आपने ये चीज बोली, मैंने एक बंदे से ये भी सुना था कि many new or young youth is trained on filing taxes when there is a tax session. मतलब इसका मतलब क्या है कि मेरे को एक डॉक्यूमेंट दे दिया, सॉफ्टवेयर दे दिया that you have to follow the same process, मेरे को फलाना ठिकाना साइड की कुछ नहीं पता, आई जस्ट नो इफ यू कम एंड टैक्स फाइल कराना, मैंने आपकी ये 4 चीजें ली, फाइल किया टैक्सेस, बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट दैट नॉलेजेबल, आई जस्ट नो हाउ टू फाइल. सो ये भी बहुत चीजें होती हैं जो चीप थिंग्स होती हैं. सो लाइक हम ये नहीं कहते कि आप जरूरी है कराओ ही कराओ, बट जिससे भी करा रहे हो मेक श्योर दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट. यू शुड नो अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन एंड हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन especially your file. ठीक है, case specifics, again case specifics, so make sure like you should keep everything in mind, है ना. Exactly. I mean the most important thing is कि you have knowledge. मतलब as a मेरे end पे मेरा जो like profession है, समय IT का, so अब मेरे को किसी को कंप्यूटर ठीक करना है, जरूरी नहीं कि मेरे को उसके लिए अपनी कंपनी खोलनी है. If I have the knowledge I can go and fix that computer for a cheap rate या affordable rate में, है ना. अगर like if I wanna really do that thing, है ना. But at the same end, कि more is kind of knowledge rather than you have your own like setup and everything, है ना. So that really makes sense, and I'm sure this is gonna help this for everybody watching. I mean, other than that, if you have anything to say. I would really like to thank you again for having me, so we can clear some questions, especially for our new immigrants to the country, because I know Canadians, they file it every year and they know almost about everything about it, right? They almost know everything about it, but for our newcomers to Canada, I would be really happy if I can help even a single person. Thank you so much Dee for this information, and I hope it helps. बाकी इसी नोट पे करते हैं हम वीडियो को एंड. अगर अच्छी लगी हो सो प्लीज मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ वीडियो विल बी कमिंग ऑन द चैनल. बाकी किसी को कोई डाउट हो, सारे लिंक्स या सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, एंड आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन. बी सेफ एंड बी हैप्पी.